Namaskar. मैं Manjusha Kelkar, 9 o'clock and it's show time. हेलो आप लोगों के सारे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैसेंजर पर मुझे कुछ लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और इवेंचुअली हम जब उस पार्ट में जाएंगे तो वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और 21st पार्ट के बाद हम शायद एक सेशन में लूँ एक वीक के बाद क्यूमुलेटिव everything inclusive. So let us see how we can move forward with this. So I know you were eagerly waiting for this particular topic, and so today's topic is medical education in USA. Every one of us is familiar with the country. अभी एनएमसी के नए रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप ये 5 कंट्रीज से करके आते हैं तो आपको इंडिया में मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और वो प्रेफर्ड कंट्रीज कौन से हैं ऑल द 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज दैट इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा यूके एंड यूएसए. So when we are talking about these countries, if you come back from these countries after doing your medical education, then you don't have to pass or you don't have to give Indian licensure exam because it is directly validated. The only reason being that these are English speaking countries and our medical education also happens in English. So somewhere we are familiar that the terminology used in this countries and all other aspects are similar to our country, and therefore we can always say that yes, they can be exempted from giving licensing exam because whatever studies they have undertaken there, they are enough to get the license in that country and therefore this is valid in this country. But this does not hold true if you are doing your MBBS from any other country which is a non-English speaking country where the native language or the normal language which this patient speak is not English. This is the new development and NMC has put down as a regulation in its website also. So fair enough for all the students who are studying in English speaking countries. So अभी हम लोग अगर सोचें कि बच्चे को यूएसए से मेडिकल करवाना है तो इसमें दो थॉट प्रोसेसेस होती हैं. वन ऑफ द थॉट प्रोसेसेस दैट हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस कर लेते हैं और पीजी करने वहां चले जाते हैं. Another thought process is that we must be studying in USA right after 12th standard. Everyone has got their own reasons for thinking this way. Sometimes they are born US citizens, sometimes they want to settle down in USA, sometimes they've got relatives in USA, and sometimes they feel that I must get quality education, the best possible technical education in the field of medicine, and therefore I want to go to US. कैसे जाएं? अभी थोड़ा सा सिस्टम में जैसे हमने कल इंडियन एमबीबीएस के बारे में बात किया तो थोड़ा सा कंपैरेटिव देखना पड़ेगा हमको. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्ट्रीम्स, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, टू डिफरेंट कंट्रीज, देन इज देयर एनी डिफरेंस? So we have to understand that difference. After 12th in India, we give an entrance exam to go into medical colleges, and that is called as NEET. We know. If you want to go to US, अभी हम parallels draw कर रहे हैं. If you want to go to US for doing your medical education, then first you have to go for BS, that is Bachelor of Science. When I am talking about Bachelor of Science, that means you have not entered into the medical stream as yet. You will be entering, but you have not. हमारे यहाँ की भाषा से अगर उसको इक्विवेलेंस की तरह कंपेयर करें, then you are going for your BSc, and that BS is of 4 years. When you are doing your BS for 4 years, उसमें पहले 2 साल के बाद में आप बोल सकते हैं कि मेरे को मेजर, मतलब जैसे हमारे यहाँ बीएससी ऑनर्स होता है, सपोज उस तरह से अगर हम देखें तो मेरे को मेजर करना है बायोलॉजी में. इसका मतलब ये हुआ कि आपके सब्जेक्ट जो है वो आपका मेजर अमाउंट ऑफ आपका जो पढ़ाई होगा वो बायोलॉजी में होगा और बाकी के सारे को हम माइनर्स बोलते हैं. सो यू विल बी डूइंग बायोलॉजी मेजर, और यू विल बी डूइंग केमिस्ट्री मेजर, और यू विल बी डूइंग बायोकेमिस्ट्री मेजर, or you will be doing microbiology, cellular biology major. And what is the reason for that? Because after this 4 years of BSc or during your BS, your 4 years of BS, you have to appear for an entrance exam. Now, what the name of this entrance exam is MCAT. So when we are talking about MCAT, we'll be discussing afterwards. So first we will discuss this particular question asked by Mr. Sandeep. I'll highlight the question. What is BS pre-med?
नाउ बीएस व्हेन वी आर डूइंग बीएस, बीएस मतलब बैचलर ऑफ साइंस जैसे हमने बताया, और प्री मेड, ये जो टर्म है ना, ये क्यों यूज होता है? क्योंकि बीएस करने वाला हर बच्चा मेडिकल के लिए नहीं जाता है. Someone says, even though I have taken biology as my major, what I can do is I may not enter into the mainstream of I may not enter into the stream of medicine, but I may do my research. I may go for my BS and then MS and then PhD. I may take this stream because I am more interested in research. This the child can say, and therefore, roughly for first 2 years, he is not yet decided whether he wants to go for medicine or not. Roughly 2 साल पढ़ने के बाद the child gets pretty good idea whether he is meant for medicine or not, and then he chooses some subjects which will help him to crack the MCAT exam. Help him to crack means थोड़ा बहुत कहीं curriculum में similarity होना चाहिए, so that when he sits for his MCAT exams, he is somewhat prepared. He has studied those courses as major subjects during his BS. So अभी इसको कहते हैं फिर pre-med. प्रीमेड मतलब प्री मेडिकल, मतलब मेडिकल के लिए लगने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं या मेडिकल के लिए लगने वाली जो तैयारी है, उसका हम प्री मेड से हम कोशिश करना चालू कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्री मेड. तो टोटल बीएस जो 4 years का होता है, सम कैन कंप्लीट इट इन 3 years also, that we can discuss afterwards because it's a credit based system, so you can always cover it earlier also, but roughly 4 years we can consider that it's 4 years BS. When you are doing your first 2 years, then you go for your majors, you select your majors. Majority of the people who want to go for medicine select biochemistry, chemistry, or biology, cellular biology, microbiology, etc. as their major subjects. Now, organic chemistry being very important here, because in case of organic chemistry, आपको उसका काफी वेटेज भी होता है और उसकी आगे जाके मेडिसिन में जरूरत भी होती है. तो इसलिए बहुत लोग बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री मेजर भी ऑप्ट करते हैं. इसके बाद आप जब ये कर रहे हैं तो ड्यूरिंग योर 3rd year एक्सेट्रा यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एमकैट. तो एमकैट की जो एग्जाम होती है, वो एमकैट के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन चालू करते हैं, पैरेलली आपका बीएस आप पढ़ रहे होते हैं. कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक साथ नहीं करेंगे. जैसे अपने यहाँ नीट होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 12th के साथ में नीट हम एक बार जस्ट ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन असली प्रिपरेशन तो हम ड्रॉप लेके करेंगे. उसी तरह से कभी कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं, और बहुत बार मैंने यूएस में ये ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि उनका जो बीएस है उसको कंप्लीट करने के बाद कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, या तो क्लिनिकल रिसर्च में चले जाते हैं, या सपोज आपने साइकोलॉजी मेजर लिया हुआ है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में चले जाते हैं. सो व्हाट दे डू, दे स्टिल आर सर्चिंग फॉर देमसेल्व्स वेदर दे आर फिट फॉर मेडिसिन फील्ड और नॉट. ये बहुत पॉपुलरली किया जाता है यूएस में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रीम वेयर द चाइल्ड इज वेरी मच फोकस्ड एंड ही नोज दैट ही वांट्स टू गो फॉर मेडिसिन. If he wants to go for medicine, that means what? He is pretty well sure. So in his 3rd year, roughly, he'll start his preparation for his MCATs, whether be it online or offline or books or whatever means he wishes to. He puts on efforts into that. The child is studying very hard. He is doing BS parallelly. He is appearing for his MCAT, and then he finishes his. Then he appears for it. He finishes his BS, and then he starts application to medical schools. Now we have to understand here कि जैसे हमने ये what is BS pre-med लिया, उसी तरह से अब आप कौन से स्टेज पर पहुंच गए हो? आप पहुंच गए हो that you have appeared for MCAT. अभी appeared for MCAT मतलब 528 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं MCAT में, and what is a good score? Roughly 520. Is a very good score, is a competitive, we can say is a competitive score, but yes, somewhere 15 etc will also do, but if you ask me, you must get roughly 520 score in your MCATs, then that is supposed to be a pretty competitive and good score. अभी क्या ये MCAT इनफ है? जैसे हमारे यहाँ नीट इज इनफ, फिर बाकी हम कुछ नहीं देखते हैं, नीट के मार्क्स के बेसिस पे हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं. और ये जो जीपीए है, जीपीए इज उनके यहाँ जो मार्किंग सिस्टम है उसके हिसाब से राउंड अबाउट आपका 3.7 प्लस का जीपीए होना चाहिए. हमारे यहाँ हम क्या बोलते हैं कि 12th बोर्ड में पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए. उसी तरह से उनके यहाँ आउट ऑफ 4 आपका 3.7 प्लस का जीपीए बनना चाहिए. आपका जो
ग्रेड पॉइंट एवरेज है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है आपके बीएस का पूरे 4 साल का, वो इतने से ऊपर होना चाहिए, इसका भी एक वेटेज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एमकैट में अच्छा स्कोर किया, आपका जीपीए भी अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ हम सिर्फ नीट के मार्क्स के बेसिस पर मेडिकल में एडमिशन देते हैं। So we are just trying to draw the parallel and understanding the difference, what exactly it takes to get admitted in a US medical college. अभी आपने बीएस किया है, वापस हम ट्रैक पे आते हैं। अभी हमने बीएस किया, बीएस में हमने एमकैट का एग्जाम दिया, हमको एक स्कोर मिला, हमने बीएस पास किया, हमको एक जीपीए स्कोर मिला। अब ये सब जमा करके नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर एप्लीकेशन टू डिफरेंट मेड स्कूल्स। जो मेडिकल स्कूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्कूल्स हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं या आप जहाँ जाना चाहते हैं या जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां आप जाना चाहते हैं, ये सारा आप अपने प्रेफरेंसेस देख के यू स्टार्ट एप्लीकेशन और यू ऑल्सो सी कि मेरा जो प्रोफाइल है वो टेंटेटिवली कौन से कॉलेज के लिए ज्यादा सुटेबल है, सो दैट आई अप्लाई टू दिस कॉलेज, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इज मोर फॉर मी। अब इसमें और क्या करते हैं बच्चे, तो इतना सब कुछ बच्चे करते हैं। I have mentioned that your experience, your personal statement आपको लिखना है कि आपको मेडिकल स्कूल में क्यों जाना है और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है, आपने और क्या क्या एक्टिविटीज की हुई हैं, आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, क्योंकि आप जब ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा हो गया डॉक्यूमेंट, LOR और सेकेंडरी ऐसे ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट, बारिंग इंटरव्यू परफॉर्मेंसेस ये सारे हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स जिसको आपने मिला के सबमिट किया मेड स्कूल को। उसके बाद if they feel that whatever documents you have submitted are enough for them to call you for an interview, then they will call you up for an interview. So now देखिए कि वेटेज किसको किसको मिल रहा है। यहाँ पे पहले हमने देखा जीपीए, फिर हमने देखा एमकैट, ये दो प्राइमरी चीजें, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई आपकी। और उसके बाद वो लोग क्या देख रहे हैं आपसे, दे आर लुकिंग फॉर व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव, मीनिंग इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका वॉलंटियरिंग वर्क आ गया, आपका शैडोइंग वर्क आ गया, आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, उसमें आपने क्या काम किया है, आपका और रिलेटिव एक्सपीरियंस क्या है, आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाना है तो आपने कुछ बुक्स पढ़ी है क्या उससे रिलेटेड, ये सब कुछ आ गया इसमें। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, दैट व्हाई एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट पॉइंट वेयर यू डिसाइडेड टू गो इन मेडिसिन एंड व्हाट ड्राइव्स यू टू मेडिसिन, because in USA these people think that medicine is a serious profession and one should enter a medical profession with giving it a complete thought, so that you tomorrow don't say that oh it was not my calling. जैसे हम लोग, हमारे यहाँ बच्चे कभी कभी बोल देते हैं कि वो तो आपने कहा इसलिए मैंने साइंस ले लिया, मुझे तो लेना ही नहीं था, आई वांटेड टू गो फॉर कॉमर्स। So this should not happen. It's your responsibility and you are accountable for it. Because ये सारी चीजें बच्चे के साथ हो रही हैं, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। So उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड, क्योंकि ये उसके बाद सपोज कीजिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब मिलाकर आपने सबमिट किया और उसके बाद आपके जो प्रोग्राम डायरेक्टर मतलब यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने सोचा कि ओके दिस पर्टिकुलर चाइल्ड हु इज हैविंग ऑल दिस व्हाटएवर ही हैज सबमिटेड इज फिट टू कम टू आवर स्कूल, लेट अस कॉल हिम फॉर एन इंटरव्यू, बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अभी तक, आप पर्सनली उनसे मिले नहीं हो, सो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एज अ पर्सन, देन दे कॉल यू अप फॉर एन इंटरव्यू। अभी जो इंटरव्यू होता है इसकी भी बहुत मजेदार कहानियां हैं, समटाइम्स वी विल डिस्कस। So then you are being called for an interview. तो इसका मतलब आपने बहुत सीरियस थॉट 4 साल दिए 12th के बाद ये सोचने के लिए कि हाँ पक्का ही मैं मुझे मेडिकल स्कूल में जाना है, और उसके बाद आपने ये सब करके एंड नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू योर मेड स्कूल व्हिच इज कॉल्ड एज एमडी देयर। अभी उसको इंडिया में हम जिसको एमबीबीएस बोलते हैं उसको वो लोग एमडी बोलते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट देन अगेन इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इनडायरेक्टली, बट लेकिन वहां पर अब आपने 4 इयर्स का जब एमडी कर लिया, सपोज कीजिए आप एंटर हो गए मेड स्कूल में, आपने 4 साल का एमडी किया, उसमें से 2 साल आपका थियरी, 2 साल आपका रोटेशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करना है। If you are in India, you are allowed to practice after doing your MBBS. But in US, you are not allowed to practice till such time you finish your residency. तो इसका मतलब कोई अगर वहां पर जाकर पढ़ाई कर रहा है, उसने 8 साल दिए मेडिकल फील्ड में, 4 years of BS and 4 years of MD, ये देने के बाद if he wants to practice, then he is not allowed to practice. He or she is not allowed to practice because that is not allowed. The lowest degree to practice in US is residency. मतलब आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन यूएस कब मिलेगा, जब आप अपना रेसिडेंसी खत्म कर लो।
इसका मतलब अब आपको सेकेंड सेट ऑफ इंटरव्यू को फेस करना है। अब यहाँ पर आपको यूएसएमएल स्टेप 1 स्टेप 2 देकर और उसके बाद आपको रेसिडेंसी में एंटर होना है, विच इज ऑफ 3 years, एंड देन आफ्टर 3 years you will get license to practice. इसका मतलब पहले 8 years, उसके बाद 3 years और 5 years और whatever, आपका अगर सुपर स्पेशलिटी में जा रहे हो तो 5 years, ये सब करने के बाद then you are ready to practice in US. Then only you'll be getting your license to practice. So this roughly is the journey of a US मेडिकल स्कूल, जिसमें कि हमने देखा कि वेटेज किसको किसको मिल रहा है. So it's a tremendous thing to go to US for your medical degree, and for that you must be crystal clear and very much sure. अभी इसमें से एक जो एक्सपीरियंस का पार्ट है, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज आई हैव टेकन अ कंप्लीट एपिसोड ऑन शैडोइंग. सो व्हेन आई से दैट इन मेडिकल स्कूल यू हैव टू डू योर शैडोइंग, तो अब उस टाइम मैंने जनरलाइज टॉपिक लिया था. नाउ आई विल बी टॉकिंग मोर विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल प्रोफेशन. नाउ यू कैन डू दिस शैडोइंग राइट फ्रॉम योर 11th grade, 12th grade, BS first year, BS second year. You can start your shadowing before even deciding whether you want to go to medical or not. और ये डिसीजन लेने के लिए हम शैडोइंग करते हैं. अब ये शैडोइंग क्या होता है, पहले आप क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, दैट यू आर इन योर बीएस, देन यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन टू योर नियर बाय फिजिशियंस एंड देन और नियर बाय हॉस्पिटल्स वेरेवर यू वांट टू गो फॉर शैडोइंग. देन यू टेल देम दैट आई हैवंट येट डिसाइडेड इफ आई वांट टू परस्यू माय मेडिसिन और नॉट, बट आई वांट टू शैडो यू. आप जब शैडो करने के लिए जाते हैं, उन्होंने हाँ बोला, आप शैडो करने के लिए जाते हैं. शैडो करने के बाद आप पेपर पेंसिल हाथ में लेकर जाएंगे, वो जब बुलाएंगे तब आप उतने बजे वहां जाएंगे, and then you are simply standing with the physician. You are not doing anything, you are not asking any questions, the physician is not teaching you, he is not telling you anything. But when the patient comes in, the physician asks the patient that this person is here to shadow me, are you okay with it? मतलब हम पेशेंट की परमिशन लेते हैं, क्योंकि पेशेंट के हम उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, हम उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारे सामने क्या डॉक्टर से बात करना चाहेगा, ये हम पूछ रहे हैं. And after we ask that, if the patient gives permission, then you are allowed to stand there. If patient says no, that no, I'm talking something private, I don't want to discuss this in front of this small child or kid or 12th grader or first year BS grader, then yes, you have to move out, and then they'll talk. After he goes, usually you're not supposed to ask any questions because you haven't yet entered the medical profession. If at this point of time you have entered the medical profession, then you can ask the questions, but you have not yet decided, you are not yet clear whether actually you want to go for your medical school or not, and therefore usually you don't ask questions. If the physician tells you on his own, you will listen, but then again you will prepare your notes completely, what you observed on that day, what you did, what was your overall thinking about the process. Suppose you are shadowing a cardiologist, suppose you are shadowing a dermatologist, what was your experience. इससे दो चीजें पता चलती है. एक तो पता चलता है कि मेडिकल प्रोफेशन में करना क्या पड़ता है, क्योंकि मेडिकल पढ़ना और मेडिकल प्रोफेशन को करना ये दो अलग अलग चीजें. जब आप पढ़ते हैं तो आप बुक से पढ़ते हैं, आपको एक्सपीरियंस रहता है इंटर्नशिप करने का, बाद में आता है वो. लेकिन अभी जब आप एंटर करने की सोच रहे हैं मेडिकल फील्ड में, तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि यस, मेडिकल इज माय कॉलिंग, और उसके लिए शैडोइंग करना एक बहुत अच्छी चीज है. ये मैंने पीछे के शैडोइंग के एपिसोड में भी बताया था, दैट टू विच एवर प्रोफेशन यू वांट टू एंटर, you can do the shadowing or you must do the shadowing. अभी वापस आते हैं मेडिकल के लिए. आपने ये सब किया और उसके बाद आप यूजुअली घर से कुछ क्वेश्चनर प्रिपेयर करके जाएंगे कि जिनके आपको आंसर्स चाहिए. यू आर नॉट गोइंग ब्लैंक देयर. आप पेपर पेन लेकर जाते हैं वहां पे. इट्स वेरी मस्ट दैट यू टेक योर पेपर एंड पेन देयर, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, आप उसके आंसर्स लिखते हैं जो आपने अपने लिए क्वेश्चंस बनाए. व्हाट इज माय टेक अवे, मैं ये इस पर्टिकुलर डे से क्या घर लेकर जाना चाहता हूँ, व्हाट वुड आई लाइक टू हैव एज माय टेक अवे. ये सब चीज हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो हम पूछने नहीं वाले हैं किसी से. Yes, hello both of you. We are not going to ask anything. After all this is done, then
you do either 100 hours of shadowing, you do 200 hours of shadowing, whatever your thought process may be. Usually लोग 160 plus hours का shadowing experience लेते हैं, and then they are pretty sure, and then they shadow different specialities also. Means they shadow dermatologists, they shadow cardiologists, दो चार जो उनको फील्ड बाहर से देखकर लगते हैं कि हाँ ये शायद मेरे लिए suitable है, then they shadow them, and then they okay, now I am clear that I want to enter into medical profession, and roughly this may be the specialties which I am looking for. I don't have to decide it right now because I am not even selected into a medical school. I have to give my MCATs yet, and after that I am prepared, well prepared mentally to do that or take it forward. So this is the process, roughly the process of shadowing. अभी इसको मैंने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, क्योंकि इंडियन माइंडसेट में हम लोग यूजुअली इसको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु आर ट्राइंग टू एंटर इनटू मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया also that they should really see to it that they follow this process so that they are not frustrated afterwards when actually they enter into medical field. So that was my submission for today, and yes, we have done with our today's session which was on medical education in USA. इसको और बहुत सारे इसकी डेप्थ है जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात कर ही सकते हैं. So if you have got any questions, you can just drop in your questions, and as well if you want to directly talk to me, you can, yes, you can, I'm flashing my numbers here as well, so you can do that also. So yes, so good night for today, and we'll meet tomorrow again at same time 9 p.m. It's signing off from Breakthrough Higher Education, Manjusha Kelkar. Bye.